Hello and namaste and welcome to this exciting episode of Sattology debunking mythology. आज we are back with the five और आज जो बात हो रही है बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। आप सबको बड़ा मजा आएगा इसको सुनने में। आज जो बात हो रही है हम सबकी वो हो रही है कि पॉलिटिक्स ऑफ इंडेक्स और किस तरह द वेस्ट इज टारगेटिंग भारत मोर। मेरा अकेला सुनने से अच्छा है कि हम सब पांचों के साथ सुने। सो अपना पूरा पैनल यहाँ पे है भी। सो लेट अस वेलकम विभूति झा जी फ्रॉम जयपुर डायलॉग्स, शरद मोहन नमस्ते। जी एंड देश कपूर जी फ्रॉम दृष्टिकोण एंड नमस्ते जी। एवरीवन। तो ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स में मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप सब लोग को बड़ा आनंद आएगा देख के कि क्या बातें हो रही हैं आजकल की हैप्पीनेस इंडेक्स बाय कंट्री। अगर हम देखें तो जो दिखा रहे हैं ये लोग वो दिखा रहे हैं इंडिया इज एट 122 पोजीशन। और मुझे लग रहा है कोई चाइनीज ये वो है, चाइनीज कोई सर्वे है। हमारे ऊपर इजिप्ट भी है, बर्मा भी है, कंबोडिया भी है, पाकिस्तान 106 नंबर पर है, बहुत ही हैप्पी देश है। ईरान भी है, महा हैप्पी देश है। नाइजीरिया में तो गृह युद्ध चल रहा है, वो भी हैप्पी देश है। इंडोनेशिया, नेपाल भी, नेपाल तो बहुत ही ऊपर है, 75 पोजीशन पे है। फिलीपींस जिसका जमीन पाकिस्तान वो चाइना छीन चुका है, वो तो बहुत ही खुश देश है आजकल, 74 नंबर पर है। और रशिया तो ऊपर रहेगा ही, वो तो हैप्पी कंट्री है। एंड इसे जाते हैं बेस्ट द मोस्ट हैप्पी कंट्री इज फिनलैंड। और फिनलैंड अभी रशिया के डर से ऊपर बैठा हुआ है एंड वहां से दे आर दे आर स्केयर्ड ऑफ दैट। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो विभूति जी थोड़ा बताइए इसके बारे में, चल क्या रहा है एंड व्हाई द वेस्ट इज टारगेटिंग और व्हाई विल द वेस्ट टारगेट नाउ इंडिया। Namaskar to all the viewers and to all our colleagues here. This is my least favorite topic. The reason why I say this is my least favorite topic is because, in democracy, the freedom element is very important. आप जो अभी जो happiness index दिखा रहे हैं, the Indians are by and large the argumentative Indian. They are always arguing about something or the other, and everybody has the right and the choice to be pissed off with whatever, something or the other. So you will not find India on the higher ranking of happiness index. In addition, many dictatorial countries like Russia, others, Pakistan and others, people have no choice but to vote for being happy. Because if they don't vote happy, you know where they are going to go. So these are all indices, in my opinion, as I have seen it, manipulated, managed, and played upon. So India is actually, in my, long ago when I was a graduate student in Pune in Gokhale Institute, I had read an article in Far Eastern Economic Review. That magazine is no longer existing. जिसमें कि मैंने खुद ही पढ़ा था कि India is a happy hunting ground for anybody to manipulate anything. Indians can be played upon, Hindus can be played upon, Indian polity and everything can be managed. So foundations of democracy kya hai? How is the authority? What is the privacy levels, responsibility levels, justice levels, right? These are important indexes. What is the level of freedom? How are you managing it, all of it? So the India के लिए खास करके क्या होता है कि, as we all know this particular narrative, that we are Sanatan country. We are antithesis, virtually, of the Abrahamic belief system. And their belief system is all about dominating everybody else and controlling everybody else. And since we know that the Western Western countries have been absolutely fantastic, I compliment them for creating an aspirational sense of them being who they are. The Italian cuisine, the British French fries, British fish and chips, French fries, baguettes, cuisine, and everything else. They create an aspirational thing for everybody to be like Europeans, like the Westerns. So in that, then they measure you. See, there is a very interesting conversation about education, for that matter. The Ivy Leagues, the British institutions, they created
an aspirational sense of the thing. वो हार्वर्ड से पढ़ के आया है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आया है. Whereas our Nalanda and Takshashila were totally destroyed, where in ancient times people used to come from all over the places to study and learn. So you look at it from this perspective, the rise of science and technology is creating a Sanatan practice all over the world, and we are not marketing it. The West recognizes that possibility, that if there is any plural country that actually exists, it's us. Diversity and plurality of the masses and everything else, we have been a living example of that. Everybody knows that Bharat, before it was named as India, Bharat was home to every suppressed, oppressed religion in the world. They all came to India. And India did not insist on them converting to Hinduism to live in India. On the contrary, every king and every monarch in India gave them the freedom to practice their faith. That's who we are. And, I always say, to hell with all these indices, you create your own. If we don't create our own indexes and indices and the way to measure it, then we will be continuously attacked. Because in the control and domination mechanism, you always need some billy goat to whip around. And that's my contention in this. I'm very firm about this matter. I pay no regard to any indexes of happiness and economic freedom that is published from the West, specifically with reference to India. Because the data is skewed, is manipulated, and projected in a manner to make you and I look bad. So I'll give you one example here, and then I will let all of you talk about it, happiness index. For example, this is very important. Yesterday, Michigan Muslims, led by Tlaib, Congresswoman Tlaib and Ilhan Omar and others, they openly threatened President Biden for American support to Israel. And they said that the Muslims will not vote for Biden. We will not vote for Biden. Imagine for a moment if this particular thing, if California Hindus had said that we will not vote for Democratic Party because you are castigating us erroneously based on false data and those indexes created by bogus equality labs and all the report, and we are not going to vote, we are going to vote different party, we would have been branded as evil. In the last 2020 election, in Georgia state, same woman, Tlaib and Ilhan Omar, had given an open call to Muslims to vote for Biden. I had tweeted at that time, imagine if Hindu American Foundation, Kona and Hindu Act had given a vote call to all Hindus to vote for some other candidate, not a Democrat. It would have led to an uproar. We would not have been able to handle it. Therefore, in my opinion, these indices and indexes are hoax because they add elements of measurement that is according to them, not according to you and I. And that's what is important because we haven't created the aspirational index that I want to be like an Indian. Like, for example, our skin color and our texture of skin is what everybody wants to become. That's why they go to tanning machine. Think about it from that perspective. So I'm saying that Indians must derive a sense of pride in being who we are, the way we are, and our institutions of Vedic or Sanatan institutions and philosophies. And that's what is important for us, for us to create a measurement index. Karna hai to. I don't like the Western India. I totally reject. I don't accept it. As an international banker, I've seen it all play out, and we all know it is manipulated. Thank you. Sorry for the long opening. No, Jabardast, actually, Vibhuti Chaji, आप always add a lot of points actually. मुझे आपका ये point बहुत अच्छा लगा कि you categorically reject it because these indexes are worth the toilet paper. Ukraine is a happier country at 88. Yes. I mean, what is in the wrong with the world? Desh ji, आप तो बहुत analyze करते हैं. People should read his newsletters. Yes. Yes. दृष्टिकोण. Thank you. So yeah, yeah. So USA कौन से नंबर पे है? Now just for reference. USA है happiness index में है
I thought you would be perennially happy. Very happy. अभी यूएस तो दिख नहीं रहा है No, कहीं पे, दिख actually, नहीं the रहा है. strange thing is, like US, United States actually says that it is in pursuit of 16वें नंबर happiness. पे, 16वें नंबर पे, 16वें. Solve number. 16. So they have always been in pursuit of happiness. That means they have never achieved happiness ever, like until now. So I don't know how they ever achieved 17 ranked happiness in the world when they have always been in pursuit of happiness. Over 38% to 40% people are either addicted to drugs or alcohol. The suicide rates are very high, and opioid crisis is almost everywhere. So I don't understand how the Americans are happy. Like if they're happy because they're always drugged, like that's another thing. But they're obviously not happy from inside, right? So that's one thing. And like Israel was also quite high from what I just saw in that list. And like first of all, like their main greeting to each other is shalom. That means they are always asking for peace. People who are never at peace, I don't know how they can be happy, because like people who are always in the midst of tension and war can hardly ever be happy. But if that is the definition of their happiness, then it's a different thing. Well, I think I totally agree with what Vibhuti ji was saying about the how useless this whole indices are, because these indices really, they cannot and do not measure anything. They are political tools. They are tools which are used by political adversaries to actually attack a certain country, because they actually play into the whole larger variables which are used to measure a country from the standpoint of economy and other things. And that's how they are using it, even with regards to the democracy and all those things. And we know how democracy promotion has been used as a tool. I mean, we should know that US has this a body called National Endowment of Democracy. National Endowment of Democracy gives money to the Democrats, to Republicans, to labor unions, and to businesses, with the aim of disrupting and subverting the other countries. They actually, so National Endowment of Democracy, for example, gives money in over 100 countries to promote democracy. That is in a country, US, where 69% of both Democrats as well as Republicans have just said in a very recent survey that the US democracy is on the brink of collapse. A country where its own democracy is on the brink of collapse wants to promote democracy in 100 other countries. Can you imagine the fate of those countries? That is the situation that we are in. This is the ridiculous, like global situation that we are dealing with, where countries who are a basket case. I mean, like, just wait and see in the coming elections in 2024 in the US and see what happens. We are a basket case, America, in terms of democracy. And we are the pallbearers of democracy around the world. I mean, how ridiculous can it ever get? And the same case with happiness index. I mean, Finland, Denmark, Iceland, आधा टाइम तो उनके वैसे ही वहाँ वो होती है, वो रात रहती है. And those guys have such long, depressing, winters, and they are going to be the happiest people in the world. And like, what kind of geopolitical variables and risks are they facing? Almost nothing compared to the other countries. But be as it may, this is how it is. So इसको ऐसे ही लेना चाहिए जैसे आपने कहा, as a toilet paper, because it's really not worth much. And we in India, people in India, and we Indian Americans outside should now come to a point where we understand the shenanigans which go behind all these things, and how various organizations
as well as countries, they work to create this kind of a narrative for India and other countries. But what is most significant to me is that other countries are wherever they are. This index and other indices, especially the democracy in like index and all this, they have been very particular in targeting India, which also essentially means that India is very high on the list of significant countries which are going to make a difference in the coming time. And that is why the venom against India has been so significant in all these indices, which are basically weapons. So keep that in mind, and we can discuss more later. So this was my opening statement. Actually, Desh ji, I was really thinking कि ये जो indexes हैं, they don't consider, if you're a mathematics student, data science, तो शरद जी तो expert है, आप भी सब लोग expert हैं इधर data science में, population is not being considered. और लगता है मोहम्मद जुबैर को भारत ने बहुत इंटरव्यू किया है इसमें, और स्वरा भास्कर एंड बरखा दत्ता. So that's how they come up with that. So Right. they're not comparing apples to oranges. Right. अगर कंपेयर करना है तो बॉम्बे से कंपेयर करना पड़ेगा पूरा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को. करेक्ट. शरद जी, हमारी तरह की डाइवर्सिटी लेके आओ, फिर बात करना. फिर बात करते हैं. यस, 2 पार्टी सिस्टम में या फिर आधी रात में सर्वे कर लिया, तो आपने बिल्कुल सही बोला. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. कितना मेडिसिन खरीदते हैं वो लोग. शरद जी. नमस्कार व्यूअर्स. तो आदित्य जी ने जब ये टॉपिक दिया इंडेक्सेस, तो थोड़ा सा मैं भी डर गया कि क्या बोलना पड़ेगा. इट्स सच अ बोरिंग टॉपिक, बट आई एग्री विद विभूति जी एंड देश जी. उन्होंने जो भी बोला, इट शुड बी रिजेक्टेड. बट थोड़ा सा मेरा दूसरा अप्रोच है इस पे, तो मैं शेयर करना चाहूँगा. लेट मी रीड 2 lines फ्रॉम some posting, which says, the 3 pillars of the Western civilization in the modern age is, first is Greco-Roman philosophy and the government. दूसरा है Christianity. and तीसरा है European nation states. तो ये इनका 3 पिलर है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का. इस 3 पिलर से इनका नेशन स्टेट का डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इंडेक्सेस का डेफिनेशन एंड द मेथोडोलॉजी जो इन्होंने बनाया, विच इज के डेटा हमको नहीं चाहिए. मेरे एनालिस्ट जो फिनलैंड में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, दे विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया. इंडिया के स्लम्स, इंडिया के रिचर स्टेट, पुअर स्टेट, एवरीवेयर, राइट, नहीं जाएंगे. वो एक ग्लास रूम में बैठकर कुछ डेटा लेंगे, कुछ लोगों से इंटरव्यू करेंगे थ्रू जूम, and then they will conclude the way the analyst would want, right? So ये पैरामीटर है to arrive or derive on this indexes ratings. तो मेरे लिए बिल्कुल this is like if a lion roars and if say a cat meows, तो लोग बोलेंगे कि भैया कौन ग्रामेटिकली अच्छा लैंग्वेज बोलता है, लायन बोलता है कि कैट बोलती है. It's like comparing apple and oranges. The diversity of a country like India, the population size को आप अपने methodology में consider ही नहीं कर रहे हैं, and then you come out with indexes. So I think indexes से rather than we getting angry कि why we are rated so low, we have two approach, right? जहाँ मुझे लगता है हम लोग 2 approach ले सकते हैं. ठीक है भाई, हमें आपने डेमोक्रेटिकली, इलेक्टोरली, जो हम 900 million people will be voting voted last time. 900 million, yes, approximately ऐसे ही कुछ है. 90 करोड़ पीपल ने वोट किया था लास्ट टाइम. इतने बड़े पीपल को वोट कराना, इलेक्टोरल प्रोसेस में लाना, ये सब अगर मायने नहीं रखता है, तो हम लोग एजिटेटेड नहीं होए. हम लोग बोले कि ठीक है भाई, आप हमें, इफ यू हैव रैंक्ड अस 116th आउट ऑफ 150 प्लस कंट्रीज जो इस रैंकिंग सिस्टम में है, ऐसे तो कंट्री 200 प्लस हैं, तो हम लोग वैसा ही बिहेव करेंगे. इसलिए वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज वियना कन्वेंशन. इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ वियना कन्वेंशन ऑफिशियली. डिफरेंट
चीज में है, बट एक्चुअल मेजर वियना कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। तो हम लोग ने देखिए कैनेडियन डिप्लोमेट्स को फायर कर दिया बिकॉज आवर अंडरस्टैंडिंग इज एट 116th लेवल। तो अब क्लास का जो पिछली बेंच पे बैठा हुआ लड़का अपने हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, यू नो। सो ऑल द ब्रेकिंग ऑफ द इंटरनेशनल लॉज जो इन लोग हम पे ब्लेम करते हैं, वी शुड गो बाय द रैंकिंग स्टेटस व्हाट दे हैव गिवन टू अस। दैट कुड बी वन अप्रोच। रादर देन गेटिंग एजिटेटेड, लेट सेम चीज को आप रिवर्स कर सकते हैं एंड यूज एज अ टूल और अ वेपन। दूसरा है कि यूनिवर्सिटीज लाइक जेएनयू, कैलकटा, जादवपुर यूनिवर्सिटीज एंड आईआईटीज एंड आईएम्स, इनको गवर्नमेंट में एक सेल बनाना चाहिए, राइट। यहाँ पे लड़के लोग ग्रेजुएशन और नौकरी के सिवा और कुछ करते नहीं है। इनका एक रिसर्च विंग होना चाहिए वेयर गवर्नमेंट शुड बी फंडिंग इट, and they should be doing indexing and mapping and all this western जो entire ecosystem बनाया हुआ है। हमारे बच्चे का जो एंटी इंडिया भारत के टुकड़े होंगे में अटेंशन ना जाकर उनको क्रिएट, इतना बड़ा पॉपुलेशन आपके पास बैठा हुआ है, उनको क्रिएटिविटी इसमें यूज कीजिए, राइट। इस और यू नो लेट इंडिया स्टार्ट पब्लिशिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंडेक्सेस, लाइक डेमोक्रेसी का इंडेक्स हो गया, यूएस का इकोनॉमी का इंडेक्स हो गया, रेशियल ट्रीटमेंट का इंडेक्स हो गया। एंड कॉलोनियल को हम कभी भी भूलने नहीं देंगे वर्ल्ड को। कॉलोनियल एरा के सारे कुकर्म को हम कभी भी भूलने नहीं देंगे। ऐसा इंडेक्सेस आप लाइए एंड यू नो यू रूल द वर्ल्ड। आप रोने से कुछ नहीं होगा, आप उनको काउंट, उन्हीं के वेपन, उन्हीं के मेथोडोलॉजी को उस तरह से यूज कीजिए। सो दिस इज माय से। नो, वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। और आपने कनाडा का इशू भी टच किया और देश जी ने भी टच किया थोड़ा इशू कि हाउ इंडिया इज बीइंग टारगेटेड। तो विभूति जी विल अगेन स्टार्ट विद द सर्कल देयर कि ये जो कनाडा का इंटरफेरेंस था, इंडिया एक्सपेल्ड 41 डिप्लोमेट्स, उस पे यूके एंड यूएस सपोर्टेड कनाडा और उन्होंने बोला कि ये वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट है। और शरद जी ने अभी बताया इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी। और एएनआई का जो एक ट्वीट आया था जिसमें इंडियन उन्होंने डिटेल में लिखा है, एएनआई ने कोटिंग इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसमें उन्होंने लिखा कि द इंडिया हैज डन इट टू रेसिप्रोसिटी। अगर उनके 21 है तो हमारे भी 21 है। तो इज दिस द बिगिनिंग ऑफ टारगेटिंग ऑफ इंडिया इन ए, बिकॉज आई थिंक इंडिया इज दे वांट टू, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया, हाउ इज इंडिया आउटसाइड, ये थोड़ा लोगों को ट्रबल हो रही है विभूति जी। देखिए, शरद जी ने और देश जी ने इम्पोर्टेंट मुद्दों पे कहा कि हमें नाराज नहीं होना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज आई डिसअप्रूव ऑफ योर्स। सो आई एम नॉट एंग्री, आई एम सेइंग दैट टू हेल विथ यू, एज द सेइंग गोज। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। इट्स लाइक सेइंग दैट बिहारी से पूछिएगा तो वो कहेगा कि पूरी आलू के भुजिया से कोई बढ़िया खाना है ही नहीं। पंजाबी के लिए आलू पराठे और मटर पनीर, nobody can beat that. Or South Indian ko boliye to dosa idli, nothing to beat that. So each one has its own perspective for the food you eat, the cultural elements you have. So these are important elements. And as rightly said, that Western people have no clue as to what we are, where we are. And that's a very important point, where somewhere along the line we Indians fail to tell the world that when the oppressed religions of the world came to Bharat for rescue and survival, we did not ask them to convert to Hindu way of life or Sanatan way of life. We allowed them to actually, we gave them space to continue with their practicing their own faith. If this element we have not marketed, Sharadji, you are right, it's our fault. We have not marketed, we have not told the world about it. So this is what is important for us to do. And you know, in Canadian जो है reciprocity, I'm glad ANI reported that, because as a foreign banker I know there was an element of reciprocity. और आप लोग हमसे परिचित हैं कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि हमें भी दूसरों से reciprocity डिमांड करनी पड़ेगी। कि अगर तुम हमें क्रिटिसाइज करते हो, अगर हम आपको कहें कि अगर आपकी शर्ट मुझे अच्छी नहीं लगी, तो आपको भी हक है कहने का कि जाजी आपकी भी शर्ट मुझे अच्छी नहीं लगी, तब मैं आप पे जिहाद नहीं कर सकता हूँ। Oh, how dare you say that? That's the point which is very important, demanding reciprocity. And international banking branch openings, there is an element of reciprocity. Not the element, that is the reality of branch openings. So State Bank of India or Bank of India or Bank of Baroda will be allowed to open a branch depending on Government of India's decision which bank to go. If Chase wants a branch in India, America will have to give an Indian bank to open a branch here. So diplomatic staff का जहाँ है, आप सब जानते हैं, इससे छुपी हुई बात नहीं है कि people like to influence
the cultural element via their democratic institutions. So we know that the students were required from India, they wanted it here. So they have created an aspirational structure of educational institutions, as I mentioned earlier on. हमारे यहाँ भी नालंदा तक्षशिला था भाई, बहुत लोग पढ़ने आते थे. हमने उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया है. हम लोगों ने उसको एक्चुअली पॉलिटिकल कारण की वजह से उसको निगेट कर दिया है. बाहर की डिग्री अच्छी है, हमारी डिग्री बुरी है. I have not done any degree in the United States. My degrees, which I obtained in India, were ranked by the American institution to say that yes, your degrees are equivalent to our degrees here. That's the important point. We have to establish that. So the issue here is very important. How do we deal with that going forward? Canadian वाला जो था वो तो आपने देखा है, कनाडा को, ट्रूडो को तो उसके अपोजिशन लीडर ने कह दिया कि he is incompetent. So again, there comes a moment in time, US and UK can say whatever they like, but External Affairs Ministry also issued the statement that we have done everything as per the Convention of International Diplomatic Relationship, and there is nothing wrong in telling them to truncate their size because you are using your extra diplomatic staff to undermine Indian efforts, and you are trying to impose your will, whether to give visas to students to come and study here, or our failing of the education system that best of the minds don't get admission in Indian colleges, they come to study here. So it is totally correct that we have to have the reciprocity and equivalence in diplomatic strength, and that's important. Thank you. विभूति जी, आपको ऐसा लगता है कि इंडिया कभी ये रूल को यूएस के लिए भी लगा देगा? Because US has very big staff. Yes. शायद इनको insecurity हो सकता है. ये हो सकता है, because see, when you are trying to dominate and control a particular state, you need your foot soldiers of diplomacy to branch out to various places. But consulate, आप अगर यहाँ सैन फ्रांसिस्को में इंडिया खोलना चाहती है, तो US will also be allowed to open a consulate there. That is the reciprocal arrangement. However, the number of people you put, you might have an argument by saying that since large number of Indians want to come here, we need more visa processing facility, we need more people to process visa and all that stuff. But then there is a requirement for visa processing, not the diplomatic staff. They go around spreading that India is torturing X or doing this. That's not required. And the kind of statement Eric Garcetti or a US ambassador makes in India about Indian social and cultural life, I don't think any Indian ambassador has done here. Yeah, we need to do that like the Indian ambassador. यहाँ पे हमारा Indian ambassador तो retired वाले तो सारे यूपन में बैठे हुए हैं. As in the Rajiv Malhotra ji quoted today in the tweet also. Correct. उन्होंने बोला उन्होंने. But उसमें मेरा एक विचार था, मुझे किसी ने कहा था कि if you want to know what your enemy is doing, you must be present there. Then only you will know. If you are not present there, then you do not know what others are talking about also. Very valid. Let's bear that in mind. Yes. देश जी. हाँ, तो ये जो कनाडा का जो है, like what really struck me was, like one of the things that they said was that ये जो इंडिया का action है, that is a threat to the diplomats around the world, which is very, very strange because it was the action against the Indian, diplomats, which was the threat, like which actually called for all of these things to happen. So I think I agree with what Vibhuti ji was saying about we need to give it back, as a culture, as people, as country, like US. Actually, more than give it back, it should be put in context. See, the thing is, let's talk about democracy, right? Now, democracy is not about one party or other party, one ideology or other ideology. It's about the structure itself. And today people are saying that democracy is under threat. It's not under threat because the structures have broken down, but because those who are administrating them have actually changed the goalposts.
see, democracy is basically a combined vector of all the voices in like within a society, right? And so the resultant vector that comes along of all the voices should actually be acknowledged and allowed to like manifest or be expressed within the society. But but if you look at the Western democracies today, and if you look at the whole narrative which is going on today, do you think that is happening? Because see how Donald Trump, which who is actually a manifestation, if you see, he's a resultant vector of over 50% of the voices within the American democracy, right? And nobody can deny that because he has a substantial following and like voter base. If he is being cancelled, then it is not because democracy is under threat. Actually, because he's being cancelled, that is why democracy is under threat. Because his voice and the voice of his followers, I'm not condoning him or I'm not backing him up or anything like that. I'm just saying the structures of democracy where the voice and the electorate actually define who the ruler is or who the main winner is being undermined because they are being put down, and that is the entire threat to democracy, and this is happening almost everywhere within the within the Western Hemisphere now, because they are openly talking about how one side of the spectrum is okay and kosher and one side of the spectrum is not. That is not what democracy is. People say, like, then bring out the the whole thing about Hitler. Okay, Hitler nikal gaya democracy se, aur ye. Hitler came out of that democracy because of the anger of the people after the Treaty of Versailles and like all that happened after that, how Germany was treated and how people actually thought like they have been humiliated. It is always democracy always throws out the resultant vector of the voices of the people themselves. So in India, if you look at, people had said even Dr. Ambedkar was not very confident about the Indian democracy. In fact, he felt that India as a society was not ready to have democracy, despite the fact that India as a society had a long heritage and lineage of democracy and democratic institutions all the way back to the Vedic times. Like even in Rig Veda, Athar Veda, there are verses on that. In that society where people were not very educated and still are not, like the education levels are not that high, the wisdom is there. Wisdom is different from education. That wisdom that is there historically about the democratic institution and the norms is extremely high. So ye jo hai, the entire argument about like democracy is all flawed in the world right now. And I think what India needs to do in this entire battle with Canada is to show Canada its real face. The autocratic ways, the fascist ways of Trudeau, what happened to the truckers and what happened to those who were backing the truckers, and the emergency which was against democracy itself and stifling of all the voices and all those things, like that should be brought up. But on the larger question of the indices that we were talking about, the happiness and other indices, I think it is time that India, along with like maybe some other, should set up actually institutions which should come out with such of their own indices, which are more relevant, more structured, and like can actually show the real face of all these, hack jobs that are being done. So I think एक तो खुद का इंडिजिनस वर्क चाहिए,
डेटा चाहिए, वो हालांकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खुल गए इंडिया में विच आर एक्चुअली हैक जॉब्स विच purport to be like data oriented organizations when they are not. But I think some indigenous organizations should really start which do a better job and the realistic job of all these things. That has not happened. नहीं, बिल्कुल सही बोला So आपने, this is क्योंकि my कनाडा का जो पूरा लाइक इंडियन डिप्लोमेट्स को इंस्टेड ऑफ सम थिंग्स हैव बीन डन बाय द एम्बेसी आल्सो, where the embassy officials should interact with the truckers, bring out the report, like some kind of that kind of like Canada needs to be shown the same way they do it in India, promote the yeah. groups which are anti-Canada, like which is very much needed, because नहीं तो ये लोग कोई समझने वाले नहीं है, लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। और मुझे संजय पांडे जी का कमेंट अच्छा लगा, मूर्खों भी पंडिता, कि सनातन में कहा जाता है कि मूर्ख भी पंडित हो सकता है, बट एक्चुअली एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि ये वेस्ट में तो ये सब चलता है कि 23-year-old गाय एनालाइजिंग डेटा, उसको कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मालूम है, एंड ही बिकम्स अ डेटा स्पेशलिस्ट, चलता है ऐसा यहाँ पे। शरद जी, सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस थिंग एंटायरली? तो देखिए, पहले तो मैंने बोला कि वी कैन इग्नोर एंड अपना इंडेक्सेस हमको बनाना पड़ेगा, बट दूसरा है कि इसका दूसरा पक्ष ये है, द अदर साइड इज कि इफ इंडिया विथ विथ 140 करोड़ पीपल अगर खुश नहीं है हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो 140 करोड़ पीपल में 80% कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं? सनातन धर्म। अर्थात सनातन धर्म के फॉलोअर्स खुश नहीं हो सकते हैं, यानी कि अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर अदर्स टू कम एंड डू देयर कन्वर्जन। दैट इज वन एस्पेक्ट टू इट। दूसरा, इंडिया इज एन इमर्जिंग पावर, इकोनॉमिकली वो अच्छा कर रहा है, कोविड को सर्वाइव किया, एंड फ्यूचर उसका ब्राइट दिखता है। तो मूडीज हो गया या एनी इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्टमेंट फर्म्स हो गई, नाउ इफ दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, क्या देखेगा? इंडेक्सेस देखेगा कि वेल इट्स लोग खुश नहीं हैं, डेमोक्रेसी जो है वो सॉलिड नहीं है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, कुछ भी हो सकता है, सो द इन्वेस्टमेंट में बी इम्पैक्टेड। तो स्ट्रैटेजिकली देखिए आपको कैसे मारा जा सकता है, राइट? इवन दो आप बोलेंगे कि आपकी इसकी यूज नहीं है, लेकिन आपको इन्हीं से मारा जा रहा है, जबकि आप उस गेम में नहीं है। आप जिस गेम में नहीं है वहां पे आपको विनर या लूजर बताया जा रहा है, बिफोर यू इवन गिविंग यू इवन ग्राउंड टू पुट योर केस। सो मुझे लगता है कि इट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। और कनाडा का जहां तक बात है, तो कनाडा ने बहुत इस सब शब्दों का खेल है। 1 महीना पहले इंडियन एमईए ने कैनेडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि भाई आपको अपने 41 डिप्लोमेट्स को हटाना होगा, और आपको 1 महीने का टाइम देते हैं, आप यहाँ से फिर चले जाएं, बिकॉज हमको दोनों जगह का नंबर्स मैनेज करना पड़ेगा, राइट? दिस इज एज पर एनी इंटरनेशनल गवर्नेंस या जो प्रिंसिपल है। नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू, उसको उन्होंने कैसे स्विच, और अगर आप इस 1 महीने में नहीं जाते, इफ यू डोंट लीव बाय दिस टाइम, देन आपका डिप्लोमेट का जो पावर्स है, प्रोफाइल है, दैट विल बी टेकन, विच मे बी कि आप ऑर्डिनरी सिटीजन होंगे, और आपके अगेंस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन का जो भी लॉ ऑफ द लैंड है वो अप्लाई करेगा। कनाडा ने इसको कैसे फ्लिप किया कि हमारे डिप्लोमेट स्टेटस ले लिया गया है, जो वो खतरे में पड़ गए हैं। सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रुथ को वो खा गए। तो सारे इंडेक्सेस का जो मेथोडोलॉजी है एग्जैक्टली यही है कि वो एनालिस्ट अपने हिसाब से ही सब कुछ दे रहा है। तो ये लड़ाई लंबी रहेगी। इंडिया कैन नॉट डायरेक्टली गो अगेंस्ट इट्स स्ट्रॉन्ग एलाई यूएसए। मेरा अपना व्यू है कि यूएसए से इंडिया शुड लर्न आल्सो सम टाइम टू, ये ट्रेड है कि आप नेगोशिएशन टेबल पर बैठे हैं, अमेरिका ओवर स्ट्रॉन्ग है, सुपर पावर है, वो आपको स्पेस नहीं देगा। आप कैसे स्पेस लेंगे, अपने अदर बैटल को आप फाइट करेंगे बिफोर यू कंसोलिडेट योरसेल्फ। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग हॉस्टाइल टू एवरीबडी, आई थिंक 24 विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। अगर ये वॉर इजराइल और हमास का अगर एस्केलेट हो गया, तो ऑयल विल बी इम्पैक्टेड, ऑयल का सप्लाई चेन विल बी इम्पैक्टेड।
राइट? अब ऑयल का सप्लाई चेन इम्पैक्ट होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगी, और प्राइसेस बढ़ेंगी तो 24 का इलेक्शन जो करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू फेस will be impacted because pricing has up there is a problem of price rise in India. तो ये बहुत कुछ रिलेटेड है। सो इंडिया को चूज करना पड़ेगा कि उसके प्रायोरिटीज क्या है। दैट्स व्हाट आई फील। इंडिया हैज अ वेरी बिग डायस्पोरा, लेकिन डायस्पोरा को यू नो एज आई सेड, डायस्पोरा में दोनों तरह के लोग हैं। यूपेन और हार्वर्ड में काफी बड़ी पॉपुलेशन है। सो यू नो इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। मे बी इवॉल्विंग नेशन का जहां तक बात है, इट इज फेसिंग ऑल द चैलेंजेस। इसको अपना बैटल खुद विन करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई हैव टू से। आप थोड़ा सा बात को अभी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके चले गए हैं। तो अभी नाउ एक तो इंडिया का बैटल, इंडियाज बैटल इज आल्सो गोइंग ऑन विद ऑल दीज ऑयल प्राइस राइज, इलेक्शंस आ रहे हैं, प्लस नाउ कनाडा का ये इंसिडेंट हुआ विच आई थिंक इज द बिगिनिंग। इंडेक्सेस का इज आल्सो बिगिनिंग। जैसे मैंने अभी दिखा रहा था स्क्रीन पे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में यूएसए, कनाडा, वेस्टर्न कंट्रीज कोई भी नहीं है उसके अंदर। Russia, which exports most of the grains to everybody else, is also shown as a hunger index में low है वो। USA doesn't export much grains because most of the US grains are GMO, so they don't export much. Their exports are done for the animals generally. तो animal food grains में ज़्यादा उनका export होता है USDA का। So the entire thing is very suspicious है। अच्छा विभूति जी, मुझे बताइए कि ये जो इजराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि चांसेस है कि वर्ल्ड वॉर थ्री का इज बीन थ्रोन अराउंड सो मच एवरीवेयर। देश जी का ब्यूटीफुल न्यूज आर्टिकल था लास्ट वीक जो मैंने पढ़ा था, वो ब्यूटीफुल आर्टिकल कि ये व्हाट सिनेरियोज आर बीइंग मेड टू फोर्स द वर्ल्ड इनटू अनदर वॉर। और since yesterday Eisenhower has been quoted in American media by everybody, Jeffrey Sachs, everybody has been quoting. So Vibhuti ji, where do you think we stand right now? Actually, I did my short take on are we heading towards World War III? A 15-minute video I made, and it has received good feedback. And in the limited scope of U.S. audience, it has done well too. And I was impressed by the fact that श्री रविशंकर जी से भी ये सवाल पूछा गया था कि ये तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है कि नहीं होना है। तो लेट्स पुट इट दिस वे, आई डोंट थिंक there will be a world war. But there is a very tricky situation here, with Iran telling openly, your time is up. And Israel definitely is facing a threat to its own existence. So with Hamas doing what they did, suddenly the world has now realized a couple of things. One is, you have seen that the divide is complete now in the US itself. The way the student community in schools and colleges, congressmen and congresswomen, and the rank and file in America is going on street protests happening. Antifa people are coming back on the street. So the relationship between the Jewish community and the rest of them will not be the same anymore. That I'm very sure about it, because एक बार ये दरार ऐसी आई है, ये भरेगा नहीं। और अब जो है, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें ये देखना है कि उनके विचार क्या हैं। So it's a very critical information, something to analyze, not information to analyze, that they want, who I'm referring to when I say they want Israel gone out of the face of this earth. And I had heard about it several years ago, that Palestinian people had said that हम तो सीधा population growth करके उनको नदी से लेकर के समुद्र में डाल देंगे. It's not a joke. They have a very serious intent. They do not like you and I. This I'm telling you because this is going to come to you and I now. Because this is again the question of who they consider to be their threat. And this is very important. The world is now coming to realize that the entire call for Islamophobia, and Biden also, I was disappointed with that. He used his State of the Union address to the Union, to the people, as a
establishing an equivalence between Ukraine and Israel. Totally two different things. It's not even apple and oranges. It is apple and coconut. So you cannot draw a completely outlandish comparison. And also saying in that speech itself, he said, anti-Semitism and Islamophobia. Hey, come on. Anti-Semitism is real. People were obliterated from the face of the earth. Islamophobia is not operating at any level. It is being imposed on you and I to curb and take away our freedom. That's the tool. Islamophobia bill is a tool used to curb your and my freedom of speech, because then you cannot ask even a simple question. आज हम ये चर्चा भी नहीं कर सकते हैं. सोचिए इस बात को. So this is their approach to hit at democracy and the freedom, take away the freedom. That's it. And the second part is that nowadays what has happened is that you and I have begun to know what is there in the text, in the books, and what the founder did. In modern definition, it is almost pedophile. It is pedophile. They don't want you to talk about him. They want to take away your right to even say that, oh my God, this happened. So they want to take that away. That's why in Quran itself, there are so many contradictions. We did a show on that, actually. We have done several shows on that they don't want you to talk about it, because the Quran is full of contradictions. At the one hand, there are elements of peace. This is not a criticism, it's an observation. आप जैसे हैं वैसे रहिए, खुश रहिए. आप हमें मत कहिए कि हम ऐसे क्यों हैं. So this is what is demand for reciprocity is required. And Adi, the question is, Third World War nahi hoga, because I think everybody knows that if it is a Third World War, there will be severe case of T3 annihilation of the planet Earth, because nobody is going to stop. And Western credibility is at a zero level right now, ever since WMD. कुछ ना कुछ तो US में और ईरान में कुछ चल रहा है, क्योंकि right from the WMD times, the weapons of mass destruction where labs were and was done in Iran, इराक को आपने उड़ा दिया. तो आज आपकी बात पे भरोसा क्यों करे कोई भी? This is the challenge. So I think World War III is not going to happen, but there will be a definite line drawn in the sand. You have to do that, because this will not be allowed to continue. The next is you and I. बिल्कुल सही बोला शरद जी. देश पता नहीं कहाँ गायब हो गए, आ गए वापस. ओके, कौन देश जी बोलेगा या मैं बोलूं? नहीं, आप ही बोलिए अभी, क्योंकि देश जी जरा गायब हुए तो मुझे लगा कि अभी उसके बाद आपके बाद. Yes. So I don't think आप ही that बोलिए, there will be मेरा कुछ तो गड़बड़ सा हो रहा था. हाँ. Okay. So I don't think there will be a World War III in copybook style the way World War I and World War II happened, because World War I and II happened purely due to European influence. वो पूरा यूरोप का ही इतिहास था, हमारा इतिहास नहीं है, एशिया का इतिहास नहीं है, अफ्रीका का इतिहास नहीं है. And right now with Russia, China, India, and South Brazil and South Africa, the pendulum has shifted. So लड़ाई तो नहीं होगा World War III types. There will be different war. दूसरा है कि after World War II, there are lot of institutions were set up, जैसे कि आपका यूनाइटेड नेशन हो गया, आपका डिफरेंट वर्ल्ड बैंक्स हो गया, डिफरेंट एजेंसी, और अभी इवन एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया. देयर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे कम्युनिकेशन बिटवीन द कंट्रीज इज वेरी इनहैंस्ड, और कोई भी इस तरह का लड़ाई का सिचुएशन को सपोर्ट नहीं करेगा. दूसरा है कि द क्रॉस डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ अदर कंट्रीज. अगर ये ओल्ड टाइम होता, वर्ल्ड वॉर वन का एज होता, और कोविड का सोर्स एक कंट्री होता, तो अब तक वर्ल्ड वॉर हो गया होता. बट डिपेंडेंस ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन, वॉर नहीं हो रहा है आजकल. इवन रशिया एंड यूक्रेन फाइटिंग, बट पूरा वर्ल्ड ने साइड लिया, बट सिर्फ जुबानी साइड लिया, बिकॉज देर इज सो मच डिपेंडेंसी, इकोनॉमिक्स का जो फैक्टर है. तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर नहीं होगा. तीसरा है कि कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है कि पीपल ऑफ द कंट्री विल थ्रो अवे द गवर्नमेंट अगर वो इस तरह के वॉर करेगा. तो आप वर्ल्ड वॉर वन का डेटा उठाइए, अमेरिका का पॉपुलेशन वाज अराउंड 180
100 मिलियन के बराबर, 100 मिलियन 110 मिलियन के अराउंड था वर्ल्ड वॉर 1 के समय में। और कितने अमेरिकन्स मरे? 116 के अमेरिकन्स डाइड। सबसे फिर आई है सेकंड वर्ल्ड वॉर 2, around I think 100 and let me see, I have written somewhere. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में अमेरिका का पॉपुलेशन वाज अराउंड 132 मिलियन और 400 के पीपल डाइड। ये इनका मिलिट्री डेटा है, राइट? यूएस का 400 के पीपल डाइड, जिसमें मिलिट्री भी होते हैं और सिविलियन जो सपोर्ट स्टाफ होता है, सब मिला के 400 के। अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे आज का इंडिया के पॉपुलेशन में, तो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में ये 4 लाख जो है किस प्रोपोर्शन पे आएगा? तो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 40 लाख, 4 मिलियन पीपल डाइंग। डू यू थिंक 4 मिलियन पीपल मर जाए और कोई गवर्नमेंट, चाहे बाइडेन, ट्रम्प, एनीबडी कुड सर्वाइव? नहीं हो सकता है आजकल, आग लग जाएगी। सो मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा। इट्स डेफिनेटली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, और ये इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है पता नहीं। बीच में तो देयर वाज अ क्लैरिटी, बट अमेरिका इज हर जगह अपना पैर डाला हुआ है। अपना एलआई को भी वो हॉट सीट पे बैठाया हुआ है, अपने एनिमी को भी हॉट सीट पे बैठाया हुआ है, बिहाइंड द सीन वो। सो दिस सीआईए ड्रिवन अमेरिकन डेमोक्रेसी जो हम लोग इंडेक्स में डालना चाहिए, जो बाइडेन और व्हाइट हाउस के कंट्रोल्स और या सीनेट या कांग्रेस के कंट्रोल से बाहर है। सीआईए के 15-20 लोग बैठकर उसी तरह से वर्ल्ड को देख रहे हैं जैसा वो उनका अपब्रिंगिंग, उनका थॉट प्रोसेस, जहाँ पे रेशियल एंगल है, एंग्लो सेक्शन सुपीरियरिटी है, एंड रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी का पूरा भरपूर मात्रा है। दीज थिंग्स आर बेसिकली क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री लाइक अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के पब्लिक का ओपिनियन ये नहीं है जो उनका फॉरेन पॉलिसी बन रहा है। दैट मच आई कैन वाउच फॉर इट, बीइंग इंडियन अमेरिकन। So my last say is कि war नहीं होगा। There are a lot of institution to stop this kind of war. कोई नहीं लड़ेगा, कोई भी अपने देश को जो बनाया है आजकल बर्बाद नहीं होने देगा। नहीं, वेरी गुड पॉइंट। एंड देश का बोलिए, मैं थोड़ा सा और मसाला ऐड करूंगा आपके लिए, क्योंकि यू राइट अ लॉट ऑन दीज टॉपिक्स। पुतिन ने बुलाया अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि भाई यहाँ पे आप चाय पीजिए, थोड़ा सा खाइए, थोड़ा बात करते हैं। और पुतिन ने ओपनली बोला अमेरिका को कि आप हार चुके हैं, अभी इधर हार चुके हैं, यूक्रेन में हार चुके हैं, कितना ही पैसा डालेंगे कुछ होने वाला नहीं है। और पर भी उसने ये भी बोला अटैक एमएस को सप्लाई मत करो, ATACMS को सप्लाई मत करो। एंड और उसके बाद से एंड every single major opposition social media in the US is run by Chinese money. बड़े बड़े नाम है, मैं नाम सब हिंकल करके कोई है, कोई बड़े बड़े नाम है सारे, सबका किसी ने कोई ना कोई चाइनीज कनेक्शन है अमेरिका में। तो ये व्हाट यू सी कि यहाँ पे जो एक तो पुतिन के चाइना वगैरह मजाक भी बना रहे हैं अमेरिका का जमकर, और अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो स्पीच था इतना डिल्यूजनल मुझे लग रहा था बाइडेन का स्पीच। लाइक वो बोल रहा था, इस तरह बोल रहा था कि जैसे कि वो जॉर्ज बुश के स्टाइल में बात कर रहा हो। जेफरी सैक्स ने बोला कि सो आउट ऑफ टच विद रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, पूरा रियलिटी से आउट है। सो कैन यू ऐड मोर टू दिस विद दिस और मोर कॉन्टेक्स्ट आल्सो? Right. So I'll disagree with Sharad ji and Vibhuti ji on the World War, and this is for the first time I'm disagreeing. I think the World War has already started. आप 4 मिलियन की बात कर रहे थे, पूरी वर्ल्ड में 7 मिलियन के आसपास लोग सिर्फ कोविड से मरे हैं. That was orchestrated from most evidence that we know. That was just one part of it. The nature of World War III is different than World War II and World War I. So, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना का एक कॉन्सेप्ट है जो माओ त्से-तुंग ने दिया था, which was people's war. They specialize in people's war. What has happened, like if you look at what Hamas has done, is like a precursor to people's war. वो वहाँ रहते हुए they have formed a group which they are using to infiltrate Israel and fight. But that at least Israel can identify कि ये हमास ने किया और ये पैलेस्टाइन में है और इनको हम मार सकते हैं, बॉम्ब कर सकते हैं. The rest of the countries will not be so fortunate, because
the people who will be fighting will be within those countries themselves. I've often said that in the next world war, especially in the next war in Europe, the war will happen on the streets. It will happen between people on the streets themselves, and there'll be bloodshed there on the streets. That is how the world war will be fought, and that is how the battle by China actually and the Islamists, मतलब जो उनके वो combination में है. See, the thing is, there is a very strange collaboration that is happening. See, Hamas के जो rockets से उसके steel pipes were from Chinese companies. The Iran and China have had an intelligence sharing operation going on since 2021. Everybody said that the intelligence behind the Hamas attack was actually a very serious one. Iran maybe may not have that kind of wherewithal for that kind of intelligence within Israel, but China may have had. So there is a very strong possibility that China had a very very strong inputs into the Hamas attack. But more important than that, they were actually taking lessons from this, because going forward, what they can use these lessons in Taiwan. But like in US, for example, ये 2023 में जो इतने सारे illegals आए हैं, from the border, not many people know, but almost 18,000 Chinese nationals have been caught. There is a report, very recent report, which said between $35,000 to $50,000 have been paid. $50,000 per person has been paid to the Mexican cartel to bring them in. Now think of it. We are talking about $800 to $900 million have gone into the hands of the cartels. There are actually very credible sources who are saying that these Chinese nationals who are coming in are just not normal nationals. They are actually PLA people. They are coming in with the understanding that at some point, and I'll talk about that point, at some point they can organize themselves into different groups and create chaos and terror activities along with the Islamists. That point will be the presidential election in US. That's when the real drama can really happen. There's a friend of mine who recently posted a video, and ये आज के newsletter में डाला है actually. So if you want to go to drishtikon.com, you can go and read that, how I've tried to list out the things which are happening. That friend of mine had a video, वो underground जो वो metro जो है उसकी London की, तो उसमें वो travel कर रहा था, and he saw this probably Islamic guy who was sitting there with a non-smartphone phone, right? जो basic वाला phone होता है जो track नहीं कर सकते, and with knuckle dusters to hit people and to beat people up, which is illegal actually to go along. What I mean to say is that there are already people in plain sight who are being readied as sleeper cells and as people who can create the kind of violence that we can't even imagine. France में जो violence हुई थी, the weapons they had were military grade weapons. Where do you think they came from? How do you think they got military grade weapons to fight within France itself? So and they fought very strong battles actually. And next such series of episodes will be decisive. So what I'm trying to say is that and the worst thing is, if the France ke weapons actually came from anywhere linked to China, France cannot attack China. France actually went and made friendship with China. US cannot attack China. Israel will not attack China, but China will use its proxies to do all these things. The Islamic forces will do its proxies to do all these things. Whom do you attack? Iraq? क्या उसका उखाड़ लोगे जाके?
though, like what I'm trying to say is the next set of forces which are going to, axis of evil as, was there in World War II. वो axis of evil अब will not be identifiable. Like will actually use your own people to fight that next world war. वो जैसे कोविड में हुआ है, like what, वो क्या उखाड़ लिया किसी का? 7 मिलियन लोग दुनिया में मर गए, हमने क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं हुआ। अब मरते रहे लोग और मरते रहे और मरते रहे, हम कुछ भी नहीं कर पाए और कोई ना कोई करवा रहा था। ऐसा ही आगे ये दिस इज जस्ट अ हार्बिंजर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज के इवन दो एक बॉम्बेबल एडवर्सरी नहीं होगा, पर किलिंग एडवर्सरी जरूर होगा। ऐसा एडवर्सरी जरूर होगा जो हमें मारेगा, पर ऐसा एडवर्सरी नहीं होगा जिसको हम मार सकेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इस वो नेक्स्ट जो ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, जो मेरी नजर में हो चुकी है। No, great point and also deep insight. Vibhuti ji, Aditya ji, before you go yeah, there, please. what is your view? Do you think World War होगा? नहीं, मेरे आज मैंने नहीं पूछा सवाल, आज शरद जी ने पूछा। बिकॉज देखिए, पूछने का रीजन ये है कि देश जी का एनालिसिस बहुत ही सही है, बट छद्म वॉर जिसको जितेश जी छद्म मीन्स हिडन वॉर तो चल रहा है, बट कोई भी कंट्री अगर ये वॉर होना था तो कोविड में आपने सही डेटा दिया, 7 मिलियन लोग मर गए, एवरीबडी शुड हैव पाउंस्ड ओवर चाइना, नहीं कर पाए। एंड दिस इज वेयर आई थिंक कि मैंने ही बोला कि वॉर जो कॉपी बुक स्टाइल जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का जो टेम्पलेट है वो नहीं होगा, बिकॉज यूरोप इज नॉट अ यूरोपियन सेंट्रिक वर्ल्ड, और यूरोप वैसा स्ट्रांग नहीं है। ओके आदित्य जी, टू यू। एक्चुअली क्या है कि मैं देजी से थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 इसी तरह का चलने वाला है। और मेरी गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड पुस्तक में भी था, जिस दिन अमेरिका अपना डेट पे नहीं कर सकता उस दिन वो इंस्टिगेट करेगा। और यहाँ पे सब मिले हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई अलग है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऑफ यूएस भी मिले हुए हैं चाइना के साथ, सब देश के एलिमेंट्स मिले। इंडिया में तो हम लोगों ने पकड़ा ही, बहुत लोगों को न्यूज़ क्लिक पकड़ा, ये पकड़ा, जो कि इंडिया में राइट्स कराना बड़ा आसान काम है। बहुत लोगों को पैसे की जरूरत है और वो उसमें काम करते हैं। और तो दी सिविलाइज्ड वर्ल्ड वर्सेस एक कम्युनिस्ट माइंडसेट, जहाँ पे मतलब थियोक्रेटिक स्टेट तो वेस्ट है ही, ऑटोक्रेटिक भी है वेस्ट, तो उसको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाता है। और डेमोक्रेसी तो एक टेम्परेरी कॉन्सेप्ट है, लोकतंत्र से उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लोकतंत्र के बारे में तो लोक संग्रह, लोकपाल, लोकतंत्र, और तो लोक संग्रह के लिए लोकतंत्र होता है। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जो भारतीय लोकतंत्र और वेस्टर्न डेमोक्रेसी तो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स ही है। लोकतंत्र अगर है तो वहां पे लड़ाई नहीं हो सकती, बिकॉज लोकतंत्र में लोकपाल इज अ फाइनल डिसीजन मेकर। डेमोक्रेसी में कोई डिसीजन मेकर नहीं है, एक पार्टी है, और पार्टी इज सो बिग आप किसी को पिन पॉइंट ही नहीं कर सकते हैं। जैसे नेहरू जैसा आदमी भाग गया कि कांग्रेस का डिसीजन है, राहुल गांधी जैसा आदमी कांग्रेस के पीछे छुपा हुआ है। सो लाइक इट्स अ स्टेज, पूरा कॉम्प्लेक्स स्टेज है दुनिया के लिए, where you cannot know who is the decision maker, who is calling the shots, who is responsible। ये तीन चीजें मालूम ही नहीं है हम लोगों को, किसी को भी। और ये सारे राजनीतिक नेता जो आजकल हैं, इनका लॉयल्टी किधर है किसी को मालूम नहीं है। देश जी कैन टेल मी वेरी वेल कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो यूनी पार्टी है, उसमें तो सभी इन्वॉल्व है, एवरीवन इज इन्वॉल्व बहती गंगा में। फ्रॉम मतलब नाम किसी का लूंगा नहीं, लेकिन यू ऑल नो कि चाहे अपोजिशन का लीडर हो चाहे मेन स्ट्रीम का लीडर हो, सभी जुड़े हुए हैं आपस में। एंड एवरीवन इज यूजिंग वन और द अदर, दीज आर द डिस्टेबलाइज्ड टूल्स, जो मेंटली डिरेंज्ड एलिमेंट्स है सोसाइटी के, टू डू समथिंग ऑन समबडी एल्स। नहीं तो 1400 लोगों को मारने के बाद भी दुनिया प्रो पैलेस्टाइन बात कर रही है। आई एम जस्ट शॉक्ड, 1400 लोगों को मारने के बाद भी ऐसी बातें हो रही है। विभूति जी, मतलब आउटरीच, लाइक मेरा आउटरीच उस पे जा रहा है कि सत्य किधर है और व्हाट इज द एक्शन हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। आपने यही बिल्कुल तो वो है। हाँ, मैंने कहा यही तो वो है पीपल्स वॉर, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि एक को दूसरे के खिलाफ कैसे लड़ाई करनी है। सॉरी
नहीं बिल्कुल सही कहा आपने. मैं इस बात से, मैं World War III की जो बात हो रही है, I was talking about in the संदर्भ of World War I and the World War II. But the nature of war has changed. Yes. So, जैसे आदित्य जी ने बहुत सही पॉइंट किया कि 1400 लोगों की निर्मम हत्या की गई, मासूम बच्चों को, इन्फेंट्स को जला के काट दिया. This is a barbaric behavior, and people are talking still Hamas is right. Now, what are you thinking and what are you smoking? But I have a different concern here. You are right, sir. इस बात की भी चर्चा हो चुकी है कि 8 million लोग एक experiment of COVID में मरे. Whether it was an experiment or deliberately done, we all know what it is, but we were not allowed to talk about it. My concern is here of a different kind. That if you look at seriously, America itself is under severe threat. And I use this particular phrase that America might end up checkmating itself in the chess language. Because वो इतनी जगह खेल रहे हैं कि उनकी अपनी obesity, financial obesity and physical obesity के कारण जो risk and liability वो रन कर रहे हैं, चाइना कभी भी इनको bankrupt कर सकता है. देखिए साहब, there is a geopolitical element there. When USSR collapsed, you and I did not feel the pinch of a USSR collapsing because we were not importing a single penny worth of item from Russia. Not even the world was. They were famous in their own sense, their raw materials and Sputnik. US did not import a single thing from them that anybody would feel the pinch. China realized that immediately, that in the battle of democracy and dictatorship and communism, we are the next target. And they succeeded in becoming supplier to your and my home, from the glass to victory pin and to a 9/11 pin. Your garden chair, your clothing are made in China. China today can derail, and they played upon the American motive and for profit. So every American manufacturer, look at Apple itself. They are manufacturing in such a big way in China that China captured the imagination of Americans. They have infiltrated. Yesterday we did a show, Sanjay ji, myself and Asha Jadeja ji. The show has gone uploaded today. जिसमें की चर्चा हुई इस बात की कि Chinese influence and Western influence in the universities has become so dominant that if you look at carefully the Hamas and Palestinian and Iranian words that are coming, they are drafted in Ivy League schools. They are drafted here. The money is playing the game. And I remember this particular thing very clearly. Somebody made the statement, America is a country of laws. Laws are made by men and men can be managed. Eric Swalwell, Aditya ji congressman from California, he was dating or sleeping with a Chinese spy for 5 years, being in the Senate Foreign Relations Committee or Intelligence, जो भी committee हो, आज भी वहीं बैठा हुआ है. So you are looking at penetration of America in such serious ways. Here is a data. आप लोग कह रहे थे ना कितने सारे Chinese आए. Look what has happened. Paul Ryan, the Republican speaker in the House, did not release funds for Trump to build the wall. $5 or $10 billion required tha. Today, what has Biden done? With the 8 million people coming up, he secured the Democratic Party vote bank. But look at the impact of it. In addition to Chinese, here is what the US government said, the special interest alien apprehension. I have the data here. I can share it with you later. Special interest alien apprehensions. From Afghanistan, 6,300 plus. Egypt, 3,100 plus. Mauritania, 15,500 plus. Pakistan, 1,600 plus. Turkey, 30,800 plus. Uzbekistan, 13,600 plus. Yemen, Jordan, Iraq, Lebanon, Iran. All these places people have come in. These have been apprehensions. The gotaways are a different category altogether. So you are looking at what Deshji was saying, which I am saying also, that today the Western ability to fight a third world war is very scary, because these people have the ability to blow up a mall, disrupt your train system. As you have seen in India, they have tried to disrupt the air transport system,
and the war is being fought at a very different level. I agree. So the nature of war has changed. America is on the verge of checkmating itself, and that's the risk. Thank you. बहुत हम आज हम लोगों ने बहुत टाइम ले लिया, बहुत पैशनेट सब्जेक्ट था, तो थैंक यू वेरी मच टू द व्यूअर्स फॉर पुटिंग अप विद अस. नहीं, व्यूअर्स तो काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, लोग देख ही रहे हैं ज्यादा. एक मैं अभी सभी पैनल के कोई भी इसको क्वेश्चन पिकअप करिएगा. एक प्रसाद जी का कमेंट आया है. प्रसाद जी, ये एक्चुअली आप इमोजीज लगाते हैं तो समझ में आएगा नहीं, तो मैं बस लास्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ. देश कपूर व्यू इज करेक्ट. हाउ इंडिया शुड डिटेक्ट अटैक ऑन भारत? आई थिंक वो डिटेक्ट तो कर ही रहे हैं. सी लाइक एक पॉइंट मैं करना चाहता था विभूति जी, जब आप बात कर रहे थे अबाउट यूएस एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जो हम जिस पे हम बात कर रहे हैं. सी देयर इज अ डिफरेंस in how US is fighting the war and how the other countries, especially China, is fighting the war. Many, like I had alluded to this in the last discussions that we had. See, US Army is, or US military force, because of its contractors and all these things, and like is actually a for-profit venture. War is a for-profit venture. Whereas for China, it is not a for-profit venture. It is actually for national security reasons. That's why they are fighting the war. Like if you look at the Twitter files, right? Twitter files, there was a very clear collaboration between Democratic Party, FBI, and the social technology companies which are making profits. Why would they do that? Because there is actually a for-profit motive behind what these guys are doing. जब एक तरफ जो है, जो एक साइड जो है वो प्रॉफिट के लिए वॉर लड़ती है, और दूसरी साइड अपने देश के लिए या अपनी सिविलाइजेशन के लिए या अपनी नेशनल सुप्रीमेसी के लिए वॉर लड़ती है, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है. इसको आप, जो प्रॉफिट वाला जो है उसको आप खरीद सकते हो, जो दूसरा वाला है उसको खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए like Vibhuti ji was saying that that Sandra was sleeping with the Chinese like this thing informant for such a long time और कुछ नहीं हुआ. हमारा ये और ये जो इतना सारा हमास के जो सपोर्टर्स आ गए हैं हर स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में, जो जा जाके बोल रहे हैं इट इज फाइन टू एक्चुअली इजरायली जेनोसाइड, जूइश जेनोसाइड की का कॉल दे रहे हैं. वो ये और ज्यादा इसको एग्जैजरेट करेंगे ये जो भी जो एडवर्सरीज हैं यूएस के. एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, डिटेक्ट करना जो है, आई थिंक the right agencies are on the correct path. न्यूज क्लिक को आइडेंटिफाई किया, हीरा नंदानी को आइडेंटिफाई किया, और जो वो पूरा चक्कर जो हो रहा था, ये धीरे धीरे जब तक दोवल साहब हैं एट द हेल्म एंड जब तक मोदी हैं एट द टॉप, ये एक्टिविटीज सही टाइम पे सही तरीके से बाहर आएंगी. देयर इज अ वेरी गुड ट्विटर हैंडल दैट एवरीवन शुड फॉलो, व्हिच आई फ्रॉम टाइम टू टाइम आई कीप गोइंग. इट इज फॉर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया, ईडी का वो है ट्विटर हैंडल. यू कैन गो एंड सर्च फॉर इट एंड यू विल गेट इट. You should see what kind of actions enforcement directorate is taking. वो generally media बाहर नहीं, वो उसको मैं बात नहीं करती, but you should go and check. You'll know what kind of people, what kind of organizations enforcement directorate is going after. So the detection is happening, and detection will happen. The ousting of those people and those organizations will come at the right time, in my view. आदित्य जी, तो एक इसमें जनरल मैं सबके क्वेश्चंस लेता जा रहा हूं बिकॉज आई वांट टू हैव क्वेश्चंस आल्सो आंसर्ड बिफोर एवरीबॉडी गोज. एक जो है एक क्वेश्चन जो आया था, ये सिद्धार्थ का आया था कि वोक एजेंडा, डेट, इमिग्रेंट्स, क्राइम्स, यूएस तो अनअलाइंड है ही, लेकिन एक अलग कमेंट में क्वेश्चन मैं पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया मैं, बट आई डोंट सी इट हियर राइट नाउ. सो एनीवे, सो the India's preparation, आपने इकोनॉमिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करी, but there is no
proactive action on the outsiders. जैसे कि चाइना का influence in India is very high due to trade, very high trade influence है. And they must be actually working with different groups also. इंडिया में जो प्रोटेस्ट हुए, सारे पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हुए, and if you look at all the Palestinian protests in London and everywhere else, everywhere those protests have some connection because all of them are good trading partners with China, all of them, including US is one of the biggest trading partners of China. 21-22 का trade हम देख सकते हैं. Mexico is also becoming increasingly a very good partner of China as well, not just US. और Mexico is a backyard of US, लोग ऐसा बात करते हैं. And there is some willful collaboration everywhere. वो Americans को दिख नहीं रहा है. And India को भी दिख नहीं रहा है willful collaboration, even though India is acting much smarter than Americans in many ways by banning Chinese app companies and many things they are doing. So do you think कि ये जो collaboration जो चल रहा है global, and personally I'll say CCP, not China, what do you think? कोई भी इस क्वेश्चन को उठा सकता है, विभूति जी, देश जी, शरद जी. Yes. I would say two things here. As the world's two prominent democracies and championing the cause of democracy. Now, remember one thing, democracy doesn't suit every leader. So there is an undermining of democracy also happening, and China is leading that pack. See, think about it. There's the collusion of finding a common interest. The Western elite, the Indian elite, the elites everywhere. I mean, they are dictators. Do you think George Soros has a democratic organization? His organization runs because the way he wants to run it. Do you think Paul Allen of all these big ones running the Microsofts and Googles are democratic institutions? They are running rules of war. You heard the phrase, rules of war. But is there any rule for peace? Nobody talks about that. So you're looking at a very systematic dismantling of democracy as a tool. Because in democracy rating, going back to the indexes and rating, they rate indexes as hybrid regimes, and things like that. India is no longer a perfect democracy, it's a shaky democracy. So when you begin to rate people, right now the chaos in America and democracies is being touted by the Islamic world, which doesn't believe in democracy, by China, doesn't have democracy, by Russia, which is not a democracy, and the elites. The Islamists don't like democracy. The elites want the control. These three groups of people have suddenly found that democracy can be used, abused to their advantage, undermining democracy. Fail. Look at Republican Party. Despite all the chaos around the world, discussion on Third World War, your strongest ally being in trouble, you're pumping money in Ukraine, unmitigated disaster in the border, and 4 people or 8 people are holding the party to ransom from electing a speaker who is in the line of hierarchy. He is the third in line to become the president of America. See, this is what the people will say. That's the democracy you want? Which leader in the world would want this kind of democracy? Tell me that. See, chaos is not democracy. Democracy can be chaotic, but chaos is not democracy. Let's understand that phenomenon. So this is what is happening right now, undermining of democracy by those 3 agencies, in which India and United States and UK, there are 3 or prominent democracies that is being, you are looking at a potential change in the nature of governance because China has been leading that band, that limited democracy is good. Even Fareed Zakaria talked about a very interesting phrase he used, that egalitarian democracy or autocratic democracy he talked about. Of maybe we need that because lines of boundaries and boundaries of freedom are being breached left, right, and center. And as the saying goes, final word, as the saying goes, the definition of poison is anything in excess. We are looking at freedom becoming a poisonous thing for democracies. अच्छा, कोई भी इस क्वेश्चन को आंसर करिएगा, कोई भी करेगा. लोग सॉल्यूशंस पूछ रहे हैं. प्रसाद जी 2 बार बोल चुके हैं. सो मिडिल ईस्ट पे अमेरिका का शुरू से फोकस रहा है. दे फोकस ऑन मिडिल ईस्ट.
और मिडिल ईस्ट को जिसने कंट्रोल किया है उसने एक तरीके से सुपर पावर बना है, जिसने भी कंट्रोल किया है। भारत हमेशा अलग ही रहा है इन सब से, एंड वी हैव स्टेड इन नॉन अलाइन्ड। सो क्या डू यू थिंक चाइना भी इसको कॉपी कर रहा है, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करके, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करके, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के सॉल्यूशंस में क्रिएट करना, और क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स टू वीकन अमेरिका? हाँ, ये मैं मानता हूँ कि सी एक चीज जो सो चाइना भी मिडिल ईस्ट में बहुत तगड़ा अपना सिक्का जमा रहा है. द डिफरेंस बिटवीन व्हाट चाइना इज डूइंग एंड व्हाट यूएस इज डन इन माय व्यू personally is this, that like if you look at the run up to this Hamas attack, you will see that Iran and Qatar, Hezbollah, Hamas, Turkey, all these communities and groups and countries were brought together uh, to to create that backdrop for the attack. So what really strikes you is that they brought together Sunni and Shia groups and organizations together. And Iran or Saudi Arabia का भी उन्होंने सुलह कराई and all those things. In my view, this is just my personal view. I don't know how true it is. Maybe other people can comment on this. The difference between US approach and the China approach is this: US lived by creating rift between Sunni and Shia, and that's how they actually ruled Middle East. China is actually financing both Sunni and Shia, bringing them together against other people, and that is how they are like playing this game. So they also want actually to get the supremacy within like Middle East, but in a different way, to use Middle East as a tool for a larger political game, geopolitical game that they have. This is my personal view. I think I have already said that there is the unholy alliance of the triad that is existing between the socialists, Marxists, Leninists, and the Islamists and the elites. Sharad ji? Basically, yeah. Okay, Sharad ji, you want to add something? So I agree with most of the views, but मेरा जो अपना व्यू है वो ये है कि चाइना को हम लोग कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हैं इन पैरेलल टू यूएस टू डोमिनेट द मिडिल ईस्ट. अगर आप इस्लाम को समझते हैं तो शिया और सुन्नी का जो डिवीजन है वो किसी पैसे और किसी चाइनीज की औकात से बहुत बहुत बाहर है. टेम्पररली इट विल बी इन मॉडरेट रूप, लेकिन वो डिवीजन परमानेंट है. वो डिवीजन 1400 सालों का डिवीजन है. So that is my first observation. Second observation is कि ईरान का जो खमैनीज है देश जी, वो भी यूपी में अपने उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं. खुमैनी के दादा आपके यूपी में ही पैदा हुए हैं, बाराबंकी एंड लखनऊ. उसको विकिपीडिया में खोजिए, मिल जाएगा. तो इंडिया ऑलवेज हैज लिवर्स विथ ईरान, और इजराइल तो हमारा एकदम एम्बिकल कॉर्ड वाला भाई है. तो मुझे लगता है कि फॉर द लार्जर ग्लोबल पीस चाइना का रोल रहेगा, लेकिन इंडिया को हम निगेट नहीं कर सकते हैं. और अरब और इजराइल पीस अगर होगा तो इंडिया और अमेरिका का वहां पे कंट्रीब्यूशन होगा फॉर द लार्जर ग्लोबल पीस. दैट्स माय टेक. डेफिनेटली आई थिंक भारत वी हैव द सॉल्यूशंस, बट ये ऐसा पीरियड है मेरे हिसाब से वेयर भारतीय फॉरेन पॉलिसी इज एब्सोल्युटली राइट टू स्टे आउटसाइड ऑफ एवरीथिंग, because this conflict is something is not created by Bharat, is not sustained by Bharat, and we are just the outside force to stabilize the region. मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है, because we have connections with all of these people, but so far our political leadership was so short-sighted. They thought that India's population should be Atmanirbhar, but with this government, at least we have understood that India's prosperity, like in the time of Mahabharata, was dependent on all these regions, even during that time also. Why was there the need for Nakul to go and conquer the west? Why was there the need for Sahadev to conquer the south, Arjun the north, and Bhim the east? वो तब भी था वहाँ पे. तो India has played a central role, भारतवर्ष, लेकिन अभी तो छोटा कर दिया गया है काट काट के.
आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे ऐसा भी लगता है कि भारतीय लीडरशिप समटाइम्स इज कंट्रोल्ड बाय द colonial propaganda and they don't give इतना एम्फेसिस टू द इंडियननेस जो भारतीयता है और हमारे कल्चर में है, which can really guide us to a much bigger heights than what we are today. क्योंकि we are by design superpower in terms of ideology, in terms of contribution, in terms of our intellectual capacity. So इस पॉइंट पे अगर आप सब लोग कुछ करें, the भारत has the capacity, लेकिन our political leadership is still very myopic. जैसे झूठ बोला गया, 1000 साल तक इस्लामिक राज था। अभी हम लोग के सतलुज चैनल पे कुछ सुन रहा था, केडिया ने उसके चीथड़ उठा के फेंक दिया बाहर। तो था ही नहीं। इलियट और डॉसन की गप्पों को हम लोगों ने इतिहास बना दिया और हमारे यहाँ की दुष्टा जो थी, सभी लोग जानते हैं कौन है, थप्पड़, तो उन्होंने तो कुछ और ही लिख दिया उस पे पूरा। तो आचार्य चतुर्सेन ने भी क्या-क्या लिख दिया, उसके इतिहास को गलत लिख दिया। सो द पॉइंट इज वी आर दैट हनुमान टाइप का हमारा, हम तो हनुमान बन नहीं सकते लेकिन हनुमान के सेवक है, दैट वी नीड सम जांबवान टू टेल अस that who you are and what you are and why you should be playing the politics which others are playing right now. बाकी सब लोग तो दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगे हुए हैं. So what do you have? Final word on by everybody, and I think we are reaching 1.5 hours today. Interesting topic. देखिए, मिडिल ईस्ट को खाना हम ही खिलाते हैं, चाहे वो कितना भी यूक्रेन गेहूं पैदा कर ले, और सब्जी की जो वैरायटीज है, जो उनकी लाइफस्टाइल है, वो भारत से ही आता है। मीट प्रोडक्ट भी भारत से ही आता है। देयर इज ऑलवेज अ बॉन्ड बिटवीन मिडिल ईस्ट एंड इंडिया, वो हमेशा रहेगा। थैंक्स। India doesn't have a problem with Middle East. The Islamic problem that India faces is Pakistan. And I think leaders of Saudi Arabia and UAE and others have realized that India is not our enemy and India doesn't consider them as enemy. As Sharadji very rightly said, they get the foods and flowers from us, from India. So the question here is, how will that eventually play out? I feel very surely that this century, and I've said this on Jaipur Dialogue in my shows, and it's my belief, this century belongs to Sanatan. True. It's for us to carry that message forward. And thanks to technology, we are able to air our thoughts. अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो हम में जो है ना, वो प्रवक्ता बनने की शक्ति नहीं है, हम प्रचारक और प्रवक्ता ना बन पाए हैं अभी तक. What Islam and Christianity have done is that they have become used proselytization to influence people in the religious part. We have been akla chalo re, बंगाली में कहते हैं अकेला चलो रे, हम संतुष्ट हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो अब चलता है. तो we have never been strong in spreading our word and taking our message forward. So today Sharad ji has written half a dozen books. You have written dozens of books. दृष्टिकोण बता रहे हैं, हम भी अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी नैरेटिव जो हो. इसका एक उदाहरण, हम सब चूंकि अमेरिका में बैठे हैं, कल ही परसों चर्चा हुई थी कोना वालों के साथ हमारे शो में. कल आशा जडेजा मोतवानी के साथ चर्चा हुई. You know what was shocking? That despite the caste bill being vetoed at the governor's level, more than 80% of Hindus and Indians have no clue what was being done to them. Look at the apathy and the lethargy that we have. हमें कुछ नहीं होगा. These are words, not mine, of Korna people who fought on the streets, literally or figuratively speaking, or Asha Jadeja Motwani, who is such a prominent person in Silicon Valley, who began to say that it was shocking that more than 80% or plus people had no clue that this was happening so viciously against us. We need to awaken. That's why I always say, awaken, arise, assert, and act. If you don't, our knowledge, wisdom, and information will be useless. Thank you. देश जी कुछ ऐड करेंगे? अच्छा, तो मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ा सा एक और बात बोला जाता था. मिडिल ईस्ट इज चेंजिंग क्वाइट अ लॉट, राइट? अगर हम देखें सऊदी अरेबिया में, देयर इज अ फंडामेंटल चेंज व्हिच इज हैपनिंग. ईरान, if the religious establishment is taken off, underlying that
thing. I don't know कितने लोगों ने बोला वीडियो देखा था जिसमें कुछ हमास के फ्लैग्स थे और इरानियंस जो थे उस मैच में उनको बोल रहे थे shove it up your like you know what. There is a fundamental difference between the populace and the establishment between like within Iran. There is a shift happening within Saudi Arabia and uh, and UAE also. That shift is happening. So what I'm trying to say is कि आज से 10 साल पहले का मिडल ईस्ट इज नॉट द सेम एज टुडेज मिडल ईस्ट, विल नॉट बी द सेम एज आज से 10 साल बाद वाला मिडल ईस्ट. I feel that India has a much better chance to exert or influence Middle East the way it is changing and what it is going to become in future much more than it could in the earlier past. And that will also become the key to take care of the Pakistan conundrum. So thank you all the viewers and thank you all the guests. अपने guest ने family है, विभूति झा जी from Jaipur Dialogues, Desh Kapoor ji from Dishtikon, and Sharad ji from Tennessee, and उन्होंने author से search Sharad ji's books on Amazon and other places also. Now more places will be available. Search by his name, you'll see his books. And if you want to check out Sattology books, search Sattology on any of the platforms, you'll get it. So thank you all for joining. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सपोर्ट से हम लोग 75,000 क्रॉस कर चुके हैं सब्सक्राइबर्स एंड आवर गोल इज टू रीच 100,000 बाय दिस ईयर. तो आप सब लोग मत करिएगा तो वील ऑल रीच 100,000 प्लस विद अमेरिकन व्यूअरशिप. सो थैंक यू ऑल फॉर इंडिया से भी जो जुड़ते हैं. So thank you all very much. And also we have crossed 7.5 million views in the US in last 2 years, which is also a big achievement for us. And so, and despite having a total dharmic content, we hardly discuss. ये 5 show तो अभी शुरू हुआ है हम सबकी वजह से. शरद जी तो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं. So thank you all. विभूति जी का support always there. And now we'll do growing further, more in a more powerful way. So thank you all very much. और जुड़े रहिए and see a lot of shows coming up on Mahabharata topics, Ramayana topics, and you'll see a lot of content here debunking mythology. Namaste and thank you.